कौन बताएगा? Who can tell me a little bit about bryophytes? कुछ भी, anything that you remember about bryophytes. Yes? Tell me about the bryophytes. Simran, You can write down in the chat box also. Whatever way you find is convenient to you, you can use that, beta. But at least you should use. So that is the thing. Ma'am, they are amphibians of plant kingdom. Okay, that's right. Even Navjot also mentioned in the chat box. That's nice. So yes, so these are amphibians. Why they are amphibians? Now who is going to answer this question? Why they are amphibians? अभी amphibians क्यों है? Why they are called amphibians? Amphibians क्या होते हैं? Ma'am, they live on land, but they need water for reproduction. That's nice. That's nice. Even Navjot, you are also right. I think Navjot is more active in chat box. Navjot, Sahajpreet, है ना? So I can see. That's also good that you are participating. That's nice. So rest of the students, जिन जिन के कैमरे ऑन थे उनको ऑन ही रहने दें. Keep it on only. Keep it on. ठीक है? Why are you turning it off? Okay, so that's fine. So they were amphibians. We discussed about that कि वो amphibian थे या हैं अभी. Okay. And are they vascularized? Yes. क्या उनमें vascular tissues हैं? Do they have vascular tissues? No, ma'am. They don't have vascular tissues. अभी किस में आते हैं? कौन सा वाला जो है next division? In that you can find. Okay, I can see now. Jyot already mentioned. Okay, so Preet. Okay. They don't have vascular tissue. No cuticle. Okay, that's nice. जो हमने notes किए थे वो पूरा लिख दिया है. That's nice. Means you understood that thing. That's nice, beta. So Preet. That's nice. So yes. So I can see in अगर मैं थोड़ी देर रुकती हूँ इट मीन्स आई एम रीडिंग मैसेजेस. मैसेजेस मतलब आपके आंसर्स भी पढ़ रही हूँ साथ में. ठीक है? सो यस, अब हो गया ब्रायोफाइट. नाउ वी अंडरस्टूड ब्रायोफाइट्स क्या हो गया. एम्फीबियंस हो गए. दे नीड वाटर आल्सो, है ना? सो वी अंडरस्टूड दैट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिवीजन. व्हाट इज दैट? टेरिडोफाइट्स. यस, टेरिडोफाइट्स. अभी तक हमने गैमेटोफाइट एंड वी लर्नड अबाउट स्पोरोफाइट. If we talk about bryophytes, which stage is dominant? Gametophyte or sporophyte? कौन सी stage और dominant होती है? Gametophyte. Gametophyte. So in bryophytes, gametophyte was dominant. कौन सी थी? Gametophyte. अब यहाँ से gametophyte जो है नीचे होना शुरू हो जाता है. Means अब वो dominant नहीं रहता. So in pteridophyte, which stage will be dominant? Sporophyte. Sporophyte. So sporophyte will be dominant. तो अभी हमने इतना सा किया. Now tell me one thing about gametes. ठीक है? ये सारी जो लाइफ साइकिल it is revolving about gametes. कौन सा gamete, कैसा gametes. Okay, it's all about the gametes. Now based on that we have different types of gametes. ठीक है? Gametes कैसे different होंगे? Those who are producing gametes, they produce different types of gametes. कौन बनाता है gametes? Obviously sex organs. ठीक है? So based on that कि जो gametes produce हो रहे हैं, ठीक है? The gametes they are producing are of same size, different size, or it is definite कि ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा. So we have three different types of gametes. Can you tell me the name of those? Any of you, can you tell me the name of those? Yes, any of you? Okay, I'll give you the term here, isogamous. Who is going to tell me what is isogamous? Okay, Navjot already mentioned about rest 2 also. You are right. बाकी कैमरे क्यों ऑफ हो जाते हैं जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ? Why you got disappear? हाँ? isogamous are similar in shape and size. Yes, so they are
similar, ठीक है. So we can say, let's make it, ये भी इतना साइज का है, ये भी इसी साइज का है, and the shape is also same, ठीक है. It is isogamous. Now moving to the next. Next is what? इसके आगे and लगा दो, and isogamous. So what does it mean? इसका क्या मतलब हुआ? Gametes are dissimilar in What does it mean? Dissimilar in size. Dissimilar in size, ठीक है. Just give me that. Yes. So dissimilar in size. So like one can be like this, one can be like this, है ना. कोई भी हो सकता है, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है. So here we are not talking about कि मेल ही बड़ा होगा या फीमेल ही बड़ी होगी. So we are not going into that, ठीक है. But if in one case we are sure only female gametes will be bigger in size, तो उसको हम क्या कहेंगे? हमें पता है कि फीमेल ही बड़ी होगी, फीमेल का गैमेट्स का साइज ही बड़ा होगा, मेल जो है उसका छोटा होगा, तो उसको क्या कहेंगे? व्हाट डू वी कॉल दैट? Ogamous. Yes. So in that case, we are sure that female is big and male is small. Okay, so in that case, we are sure about this. Is it clear? What is the difference between these three terms? और इसको Yes. ऐसे निकालो, ठीक है. Make it like this. अब इसमें आप ये कह सकते हो, ओगेमस में फीमेल gamete always larger in size. So यहाँ पर हम sure हैं. In that case, we are not sure. ठीक है. It can be big, it can be small, depending on the organism. Next, monoecious क्या होते हैं? Yes, what they are? Who can tell me? You must have learned about this also. थोड़ा सा सोचो कहाँ पढ़ा है, या आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा. Yes, बेटा. Ma'am, plants bearing both male and female reproductive systems. अच्छा, स्पेलिंग में कुछ लग रहा है गड़बड़ है? Can you find any error in that? जिसने पढ़ा होगा उसको पता है. What is the E mistake? नहीं डाली मैम आपने. Who told me this? Yes, what's your name, beta? I can see one. Gurjot. Good job. I can say one student is very active, and I like my students who find the error. So E जो था मैंने यहाँ पर मिसिंग किया था, कि देखते हैं कौन जागा हुआ है इसमें क्लास में. Who is active? So monoecious क्या होते हैं बेटा? Monoecious are bisexuals. They are bisexual. ठीक है. Navjot said hermaphrodites. Okay. So bisexual means those are having both gametes, both sex organs. ठीक है, एक ही के पास. इसी का ऑपोजिट क्या होता है? राइट डाउन इन चैट बॉक्स. लेट्स सी द स्पेलिंग. कौन बताएगा? Dioecious. Dioecious means unisexual. Means that organism is having only one sex.
इधर इट कैन बी मेल और फीमेल, दोनों नहीं होंगे एट ए टाइम, ठीक है. So I can see in a chat box also. Yes. Okay. So these are the basic terms that you should be aware of. ठीक है? Is it clear? Now let's move to the pteridophytes. Back to the pteridophyte basically, जहां पर हमने चलना था. So we left with that. अब हमने एक पढ़ा था sporangia. Who is going to tell me what is sporangia? Sporangia होता क्या है? What is sporangia? What is sporangia? Who is going to tell me? Sporangia, then moving ahead, there is one more term related to this. Yes? Batao, who is going to tell me this thing? Ma'am, that produces and stores reproductive spores. That basically produce and store spores. है ना? That part produce and store spores. तो उसको हम कहते हैं, we call it sporangia. Now where sporangias are present? Where are they present? कहाँ पर होते हैं? Where they are present? Yes, where they are present? Sporangia are present where? You are right. They are, they produce spores and they store also. But where sporangia is present? On the leaves. On the leaves. We can say leaves or leaflet. So sporangia, we can say present on leaflets or leaves. और फिर उसको क्या कहते हैं? What do we call this? Leaves that are having spores, sporangia. What do we call them? उसका भी एक नेम होता है. Sporophyll. Sporophyll. इसको लिखो बेटा, ये टर्म बहुत बेसिक है जो आप लाइफ साइकिल में जब पढ़ते हो, यू गेट कंफ्यूज. स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट इज दैट स्ट्रक्चर, पूरा वो जो स्ट्रक्चर है हमने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है. स्पोरेंजिया that produce and store spores and where it is present in sporophyll. अब ये जो sporangia है, if it's present in the cluster, okay, अगर ये cluster की form में present है, so what do we call it? We call it sori or sori, ठीक है. So we call it sori. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. कि ये जो हम टर्म्स यूज करते हैं ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, इनका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ठीक है. अब मैं भी आपको बीच बीच में से बता रही हूँ बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट द लाइफ साइकिल. आई विल शो यू वन वीडियो ऑल्सो ऑन दिस लाइफ साइकिल. तो उससे पहले आई वॉन्ट यू टू गेट अवेयर ऑफ और फेमिलियर विद दीज टर्म्स, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. इफ वी टॉक अबाउट गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट कैसा लगता है? इट इज लाइक हार्ट शेप. यस, हमने लास्ट टाइम ही बनाया था. प्रोथैलस भी कहते हैं, वी कॉल इट प्रोथैलस. एंड इसका साइज अराउंड 1 सेंटीमीटर के अराउंड होता है. इट इज शॉर्ट लिव्ड इन, where it is short lived in pteridophytes. I'm talking about pteridophyte. Short lived, and here it is independent. It is not dependent upon sporophyte or anything. ठीक है. So these are the things. This is gametophyte. It can take nutrients itself by this thread-like structure. This is called rhizoid. ठीक है. And this is the structure responsible for producing gametes. क्या बनाता है ये? Gametes. So it produces both male
and female gametes. ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स बनाता है. Now who is going to tell me the female and male sex organs name? हमने लास्ट टाइम किया था, मैंने आपको बना के दिखाया था. So what was the name of that male and female gametes or sex organ? Sorry. Firstly, tell me the name of the sex organ and then tell me the name of the gametes. I specifically आपको बता के दी थी कि ऐसे होता है. Antheridium and archegonium. So male is what? Antheridium. 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 And female is Archegonium. 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 ठीक है. Now what is their gametes से? Gametes का क्या नाम है इनके? What is the name of their gametes? Male क्या gamete produce करता है? Gametes की बात कर रही हूँ. Now I'm talking about the gametes. Gametes का क्या नाम है? Antherizoid and egg. Antherizoid. Female. Antherizoid What and is egg. the name of female gamete? What is the name of female gamete? Egg. Simple egg. And what is the name of male gamete? That is Antherizoid. Antherizoid. antherozoids. Antherozoids. ठीक है. सो ये पूरी जो भी हमने पढ़ा, इट इज ऑल अबाउट गैमेटोफिटिक फेज, जो हम कहते हैं ना ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. सो फर्स्ट हम कर रहे हैं अभी गैमेटोफिटिक. ठीक है. उससे पहले क्या होती है? स्पोरोफिटिक भी होती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. यहां तक हो गया हमारा गैमेटोफिटिक. गैमेट्स बन गए हमारे. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट? क्या होगा नेक्स्ट? नाउ गैमेट्स आर फॉर्म्ड, प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर गैमेट्स प्रोडक्शन? Fertilization. फर्टिलाइजेशन. सो इसको नीचे लेके आते हैं. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? Zygote. Zygote. जाइगोट विल फॉर्म. अब वापस जरा गैमेटोफिटिक पे आते हैं. कम बैक टू द गैमेटोफिटिक. टेल मी द पोलाइडी. पोलाइडी क्या होता है? ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है. दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल मी. नाउ टेल मी एंथेरोजॉइड एंड एग इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? Haploid. Haploid. हैप्लॉइड. सो हैप्लॉइड को कैसे लिखते हैं? N. एन. नाउ फर्टिलाइजेशन होगी है. जाइगोट विल बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? Diploid. Diploid. So it will be diploid. Now what it will form? अब ये क्या बनाएगा? Mitosis of your embryo. Embryo. It will form embryo. फिर further क्या होगा? Young sporophyte. Yes. Young sporophyte will form. फिर क्या होगा? हमारे पास proper sporophyte होगा. Then this sporophyte से क्या होगा? Again spore will form. Then these spores for the gametes. Yes. This is how cycle will move on. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. This is how. Now we can divide this cycle here. है ना? हम divide कर सकते हैं इसको ऐसे. So we can say this is gametophytic and this is sporophytic. Yes. Can we say like this? Yes, ma'am. So this is called alternation of generations. ठीक है? Gametophytic, sporophytic. दो अलग अलग आ गई. Is it clear? And in pteridophyte, sporophytic generation is dominant. ये dominant. It is dominant. So is it understood? Clear है सबको? Yes, Any ma'am. doubt?
Any doubt in this? Please do ask me, बेटा. क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में. इट्स जस्ट सिंपल थिंग एंड वी आर अवेयर ऑफ दिस. सो एनी डाउट यू कैन आस्क मी. नो डाउट. सो बिफोर अब मैं आगे चलूं, आई विल शो यू वीडियो. ओके, सो एवरीवन पे अटेंशन हियर. सो वी आर स्टार्टिंग फॉर द स्पोरोफाइट. ठीक है, जो भी हमने टेरिडोफाइट का किया है, हम स्पोरोफाइट से स्टार्ट कर रहे हैं जनरेशन. स्पोरोफाइट मींस प्लांट दैट इज हैविंग टू, क्या होगा टेरिडोफाइट के पास? टू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स. जबकि इससे पहले ब्रायोफाइट के पास ये सब नहीं था. ठीक है, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट हैविंग वेस्कुलर टिश्यूज आल्सो. ठीक है, so now it is having vascular tissue, so it is having roots, true roots, leaves, and this is sporophyte, and this is having sporangium, you can see here. And this is स्पोरोफिल्स. ठीक है, अब यहां से क्या होगा? अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? शो यू. वेट, एक तो हो गया लीफ. लीफ में जो आपने देखा, लेकिन इन सम टेरिडोफाइट्स लाइक पिसेटम, सो क्या होता है? इट इज लाइक दिस. जैसे हनी कूम होता है ना, इट इज लाइक दिस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस, और स्ट्रॉली भी कहते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस, it produce spores. Here you can see through a process that is called meiosis. Spores release हुए यहाँ तक. अब यहाँ पर क्या स्टेज आ रही है? गैमेटोफिटिक. You can see its heart shape now. ठीक है, इसको थोड़ा हम जूम करके देखते हैं यहाँ पर. So here you can see. So it is now heart shape, और ये जो यहाँ पर thread like structure that is coming out, it is what I was talking about, rhizoid. And this is prothallus, this is gametophytic. ठीक है, so let's see here, move ahead. So now what happened next? This prothallus will produce, here you can see two gametes. One is male, that is antheridium, and the second one is archegonium, that is what? It is female sex organ. ठीक है, now from these two respective sex organs, gametes will form. So here you can see it produce, antheridium produce, you can see these tiny structures that are coming out of this structure, antherozoids, and it is going to where? To female sex organ, that is archegonium, and here in the middle it is having egg. यहाँ पर इसके पास egg है. Now because the movement of this, it needs water, so here you can see. Okay, so it is going inside this archegonium. Now what is the next step? That is fertilization. ठीक है, ये egg यहाँ पर गया, fertilization होगी. ठीक है, so you can see that. So यहाँ तक मैंने आपको वीडियो के थ्रू एक बार दिखा दिया जो भी हमने भी पढ़ा. ठीक है, so this is what we learned till now. ये वाला हो गया इस फेज के बारे में. We talk about this phase. तो आई थिंक इट इज प्रीटी मोर क्लियर कि वीडियो के थ्रू भी अगर हम देख लिया. इज इट क्लियर बेटा? हाउ इट मूव्स, हाउ इट गोज. ठीक है, सो दिस इज व्हाट. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स. क्या वो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है या कुछ डिफरेंट भी प्रोड्यूस करता है? यस, बताओ, टेल मी. Okay, so let me tell you, we can classify pteridophytes into two categories based on the spores they produce. अब जो वो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो सेम शेप और साइज का ही कर रहा है या इट इज डिफरेंट नाउ? ठीक है, सो लेट्स सी हियर. सो इट इज होमोस्पोरस, इट कैन बी होमोस्पोरस, इट कैन बी हेट्रोस्पोरस. अब इसको कौन बताएगा, इसका क्या मतलब होता है होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस? हु इज गोइंग टू टेल मी? इट इज वेरी इजी, टर्म से ही आप बता सकते हो, यू कैन इजीली फिगर आउट. मैम सिमिलर काइंड के अगर स्पोर्स हैं तो होमोस्पोरस. So we can say here, write down one kind of spore.
एक जैसे दिखने वाले, ठीक है, one kind of spore. So will it be unisexual or bisexual? क्या होगा ये जो होमोस्पोरस है, what they will be? So they will be bisexual. Now coming to heterosporus. अब heterosporus उसके opposite हो जाएगा. Now who is going to tell me what is opposite of homosporus? Two kinds Two of kinds spores. of spores. Two kinds of spores. That's right. Two kinds of spores. ठीक है. And now gametophyte कैसा होगा? Bi और unisexual? Unisexual. Unisexual. ठीक है. Okay, Sajpreet also mentioned in chat box unisexual, and one more student. I think I skipped one student name. So let me see. Okay, Sajpreet. Okay, unisexual. That's nice. So yes, so that's right. Okay. Next thing that I want to ask to you that yes, if we talk about sporangia, if it produce two different types of spores in case of heterosporangia, ठीक है, in that case, so what will happen to different types of, क्या होगा, spore produce होंगे, they will produce, आगे जो है two different types of gametes बनेंगे हमारे, है ना, अलग अलग दिखेंगे, जो सेम नहीं होगा क्योंकि हमने कहा कि वो अब यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे, मींस फीमेल जो है वो अलग होगा, मेल अलग होगा, ठीक है, दे विल लुक डिफरेंट. सो इन दैट केस male, if we talk about male and talk about female, so what is going to happen in that case, male छोटा होगा, ठीक है, so we can say microspore, और इससे निकलेगा जो उसका स्पोरेंजिया, we can say microsporangia. इसका क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरेंजिया, because it is bigger in size. इसको बना लो बेटा सारे साथ साथ. Microsporangia produces microspore. Microspore means male, आगे चल के क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट. Megasporangia, it produce megaspores that lately will form female gametophyte. Is it clear to everyone now? Sure. So now let's move ahead. So now टेरिडोफाइट में we learned कि क्या होता है, we learned कि इसमें जो है वेस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, it is vascularized, है ना, ट्रैकियोफाइट्स. नाउ क्या यहाँ पर if we talk about टेरिडोफाइट्स सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्या सीड्स बन जाते हैं, is it seed bearing plant? Okay, Navjot is saying yes. So what are the
we can say characteristics, or we can say जिसकी वजह से we can say that it can bear seed. कैसे ये शुरू होता है, इसका कैसे जो है, how it is different from the bryophyte, कि इसमें ये चीज आ जाती है. Development of zygote takes place in female gametophyte. Yes, that is also one thing. Yes, it is given in NCERT. Yes. And what else? If we say that it here seed formation starts, but it starts only on those pteridophytes that are heterosporic, means they have separate male and female gametes. Okay, सिर्फ उसी में ही आता है. Their male and female gametes are different in that, only in that case. ठीक है? So if we say कि what are the two steps that tell us that here in pteridophytes seed formation started. So first is क्या आ जाएगा? Heterospory. Heterospory means they having two different types of gametes, male and female. They look different. अभी हमने पढ़ा है वो चीज, hetero and homo. So you are well aware of that. ठीक है? Second that tell us यहाँ से start हो रहा है, but here seed is not formed completely. I will tell you the reason also. ठीक है? यहाँ पर start हो रहा है and it will finally completed in the next. ठीक है? Female, only female gametes retains on gametophyte. Not gametophyte, sporophyte, sorry. Sporophyte. ठीक है? अब why we say that यहाँ पर seed नहीं बना completely. So इसको स्टार करके लिखो. No ovule formation. Ovule नहीं बना. Seed किससे बनता है? ओवरी से बनता है, ओव्यूल से बनता है. यस, सीड किससे बनता है? ओव्यूल से या ओवरी से? यस, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. यस बेटा, माय क्वेश्चन इज वी हैव ओव्यूल एंड ओवरी. ठीक है? नाउ छोटे बच्चे वाला एक क्वेश्चन पूछती हूँ. वी हैव दिस एप्पल. Let's put some seeds in that. अब ये सीड्स किससे बने और ये जो पल्प है ये किससे बना इस एप्पल? Someone mention. Okay. So Navjot, you are right. I'm not telling the answer right now. Let's explore this thing. Suprit. Okay. Seed. Yes, Suprit, you are also right. Sahajpreet, sorry. Sahajpreet. Suprit also mentioned, I think. Yes, Suprit ने भी answer दिया है. Okay. Yes. Rest of the students, बाकी सबने भी join की हुई ना class? Yes, do respond बेटा. In the way. Ovule develops into seed and ovary develops into the fruit. Repeat. एक बार फिर से बोलो.
Ovule develops into the seed and ovary develops into the fruit. Ovary develop into the fruit and ovule develop into the seed. That is what you said, है ना? Yes. So yes. So everyone, ovule क्या बना रहा है? Seed. And the pearl, ठीक है, या फिर हम कहें fruit. ये किससे बन रहा है? It is from ovary. So अगर ovule नहीं बनेगा तो seed नहीं बनेगा, and that's why seed formation is not complete in the pteridophytes. Is it clear to everyone? ठीक है, तो अब घर जाके आप देख सकते हो, सेब खाते हो कि आप क्या खा रहे हो. Are you eating matured ovary or ovule? So you can figure out this thing. You can tell your parents also, your siblings also कि मैं seed खा रहा हूँ या ovary खा रही हूँ या ovule खा रही हूँ, है ना? So now you can link it with this. ठीक है? So अभी जो हमने साइकिल कंप्लीट करी है, ओके, उसको एक बार फिर से वीडियो के थ्रू देखते हैं. लेट्स सी. Okay, we have covered this one now. Okay, so let me show you another video. Okay. So young sporophyte से mature sporophyte बन गया, ठीक है. The life cycle we left it. So one side this is gametophytic, ठीक है. यहाँ पर gametes है सारे. यहाँ पर sporophytic stage, ठीक है. So this is called alternation of generation, ठीक है. Now we discussed about this pteridophytes, homosporous, heterosporous. So now here is homosporous. Now look here beta carefully. Spores are similar in size. उनका size, shape, all are same. You can see here. So it is homosporous. ठीक है? Spores you can see easily evident here. So you can see, and these are similar in size and shape also. So now let's move. Coming to heterosporous. Now this is a spore and this is also a spore. Here it is bigger in size. You can see megaspore that finally gives female gametophyte later on. This is microspores that is male. Okay? So it is smaller in size and also the shape is different as compared to female one. So here you can see here. So it is what it is forming. So here you can see it is forming egg. Okay? Now coming to this part, that is male part. So here archegonium, so not archegonium, this is archidium that produce antherozoites, ठीक है. Later ये हमने पहले भी देख लिया वैसे कि कैसे जो है यहाँ से इनका फ्यूजन होता है gametes का and it forms zygote then gang embryo. So here you can see young sporophyte and mature sporophyte. So एक बार जो ये revision हुआ, is it clear to everyone? कि अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको मैंने आपको एक वीडियो फॉर्म में दी ताकि क्लियर रहे. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट इन दिस पार्ट? ओके सहजप्रीत, दैट्स नाइस. सो अब सबको क्लियर है. सो व्हाट आई वांट एवरीवन टू क्विकली, फटाफट नोटबुक निकालो, कलरफुल पेन पेंसिल निकालो एंड अभी के अभी जो टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल उसको ड्रॉ करो इन योर नोट. And I request everyone to turn their camera on so I can see that you all are doing this. Yes, beta. सब अपना camera on कर लो now. It's a time to turn on your camera. Yes, everyone. So I'm requesting and I'm sending you request. ठीक है, मैं सबको Zoom पे request भेज रही हूँ to start their video and I expect you to turn it on. ठीक है, तो सब इसको जो है turn करो on. So I can see now few students have turned on. Yes, turn it on and start making your this alternation of cycle in pteridophytes only. Yes.
Yes, और if you can after making it कैमरे के पास लाके एक बार मुझे दिखा सकते, ठीक है? I can see that. I will zoom अपनी साइड से मैं zoom करके I can see that. ठीक है? बेटा कैमरा ऑन रखो. Is it done? किस किस का हो गया है? Oh, I can see Simranpreet. Let me zoom beta. Yes, that is what I want should be. That is very good beta. So everyone, you can see. मैंने इसको पिन किया है. If you can see, pteridophyte, then sporophyte, sporophyll, sporangia, spore mother cell, spores, then gametophyte,
then archegonium, antheridium, okay, fertilization, zygote, then embryo, then going back to the gametophyte. That's nice, beta. That's nice. Good, beta. Good, Simranpreet. So next is Gurjot. That's nice. Wonderful. Gurjot, beta, हाँ, ये turn on करना फिर से. Your camera is off, beta. Yes. इस side से चलना toward left. Firstly left. Yes. Sporangia, spore mother cells, spores, gametophyte, antheridium, archegonium. Then move to the right. Yes, gametes formation, then fertilization, zygote, embryo, and sporophyte. That's good. Wonderful. Wonderful. That's good. और किस किस का हो गया है? So that's really nice. Wonderful, beta. So now, it's a, we can say, puzzle, ठीक है? क्योंकि आपको इतना सब आता है, so I hope you can easily figure out. अगर plant को let's divide or categorize into seed forming और not seed forming category. तो जो seeds नहीं बना सकते उन plants को क्या कहते हैं? What do we call them? जिनके पास seeds नहीं होते या फिर if we say they cannot form seeds, एक term होती है. What is that term? What's that term for that? Cryptogram. Cryptograms. So कौन से जो division है वो इसके अंदर आती है बेटा? Algae, bryophytes, and rhidophytes. So algae, bryophytes, and pteridophytes. So they cannot form seeds. Okay. Now those who can form seeds are called what? उनको क्या कहते हैं? What do we call them? Phanerogams. Phanerograms. So now we can further classify them. Are they flowering or non-flowering? So flowering को क्या कहते हैं? Angiosperm. Angiosperm. And non-flowering? Gymnosperm. Gymnosperm. So इसको भी सब बना ले. This is a flow chart. Gymnosperm. Okay, I think gymnosperm का spelling गलत होगी. Gymnosperm. ठीक है? So now we are only left with this part. That is seed bearing plants, phanerograms. ठीक है? So we will discuss about in the next class. ठीक है? और सब एक बार पढ़ के भी आना इसके बारे में. Or any other doubt, beta, अगर if you want to ask, you can still ask me. Any of you want to discuss something related to this, you can discuss with me. You are most welcome. Yes? Okay. So no doubt that I can see. ठीक है. So now with this, your class is over. ठीक है. Take care, beta. We will meet soon. ठीक है. Bye. Bye everyone. Bye, ma'am.